and shunning unilateralism. And yet, to our shock and deep disappointment, the region witnessed extremely disturbing developments during the last few months. Pakistan supports and respects sovereignty and integrity of all SCO members and its neighbors. We respect all international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Uninterrupted access to due share of water as per existing treaties among the SCO members will strengthen the SCO working smoothly and will support the achievement of broader goals for which SCO was established. Excellencies, for its part, Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. In the meanwhile, we will continue our efforts along with all SCO members and the chairman of SCO to promote peace, progress and prosperity in the entire region and to ensure lasting peace in South Asia. We call for a comprehensive and structural dialogue to discuss all outstanding disputes. And, Honorable Chairman, I will request for your kind consideration to lead this dialogue under your sagacious leadership so that we can have its dividends as early as possible. Ladies and gentlemen, Pakistan has always abided by the UN and SCO charters and will always respect the principles that will hold dear to all of us for our collective good. As a peace-loving nation, Pakistan has always advocated dialogue and diplomacy, consultation over confrontation. Ladies and gentlemen, Israel's unjustified aggression against our fellow brotherly member country, Iran, a fellow SCO member state, is condemnable and therefore unacceptable. Mr. Chairman, the suffering and starvation unfolding in Gaza is a festering wound on our collective conscience. We reiterate our call for an immediate end to this gruesome violence and heart-wrenching bloodshed in Gaza. Pakistan has consistently supported the UN-mandated two-state solution, that is, the creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds al-Sharif as its capital. Ladies and gentlemen, the menace of terrorism, separatism, and extremism continues to pose a grave threat to Pakistan and endanger peace and security of the entire SCO region and SCO family. We condemn terrorism in all its forms and manifestation with fullest force at our command, including
state terrorism in clear and unambiguous terms. Those who have long used terrorism for advancing their political interest must know that the world no longer buys this fictitious narrative. We have, ladies and gentlemen, irrefutable evidence of the involvement of some foreign hands in the devastating Jafar Express train hostage incident, as well as countless other terrorist attacks against us in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Ladies and gentlemen, Pakistan has rendered great sacrifices in combating terrorism, not only for its own self, but for the region and far beyond. And in the process, we have lost over 90,000 valuable lives, mothers, children, engineers, doctors, scientists, ordinary citizens, shopkeepers, our officers and sepoys of our armed forces, and endured economic losses over $152 billion, a sacrifice which has no parallel in the annals of history. And there cannot be a bigger manifestation of our unwavering commitment to defeat terrorism with the cooperation of all SCO members and the global powers around the globe. Ladies and gentlemen, Pakistan has always believed that a peaceful and stable Afghanistan, a brotherly country, is not only in our own interest, but that of the entire region. While we remain engaged in building our ties with the Afghan leadership to leverage them as economic partners and good neighbors, we hope that this cooperation with Afghanistan and our trilateral meetings between China, Pakistan, and Afghanistan will have positive results in times to come. Honorable Chairman, as SCO leaders, we have reaffirmed year after year the significance of enhanced regional connectivity. This requires efficient land, air, and rail transport corridors to ensure reliability of supply chains. Expansion of the China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of the Belt and Road Initiative, can serve as a practical demonstration of SCO's vision for regional connectivity and economic integration. Excellencies, as I speak before this august assembly of great leaders, my country is once again passing through unprecedented torrential rains, cloudbursts, and massive devastation due to consequent flooding in 3 of our major rivers. These floods have resulted in the loss of huge numbers of human lives and has damaged severely our infrastructure, property, and crops as well, and loss of precious livestock. Ladies and gentlemen, we deeply appreciate the international community's, including China's, solidarity and sympathy and support with us
and I thank you all. Just as my brave and resilient people are engaged in the rescue and rebuilding efforts, we are also focused on charting a new path of hope, evident in Pakistan's impressive economic recovery over the last 18 months, paving the way for a prosperous future and great cooperation with all of you sitting on this table. Our economic transformation plan is founded on 3 pillars: to expand our trade through export-led growth; 2, to explore new avenues for foreign investment in infrastructure, agriculture, AI, IT, mines and minerals, and energy, and to encourage innovation and research and development; and thirdly, to enhance revenue generation through comprehensive tax reforms in Pakistan under my watch like never before. Ladies and gentlemen, we are empowering our youth because youth is our challenge. And in Chinese adage parlance, a challenge always carries with it an opportunity. And therefore, our youth bulge is a challenge as well as an opportunity. And creating exciting opportunities for them for their productive encouragement and meaningful employment. These efforts are already showing encouraging results with reduced inflation, a current account surplus, and a soaring capital market in the region. Excellencies, to conclude, I reiterate Pakistan's solemn and unwavering commitment to the SCO Charter and reaffirm our steadfast resolve to uphold the noble values of the Shanghai spirit. In conclusion, our journey ahead may be long, arduous, and at times it will be bumpy and uncertain, with scorching days and chill winds that would test our resolve, our patience, our commitment. But the destination we seek makes it all worthwhile, a future of shared peace, stability, and prosperity for 3.5 billion citizens of our SCO family members. Together, let us stay the course. I thank you all. आज़म का SCO सरबराहान मुमलिकत कौंसिल इजलास से खिताब। उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जामे मकालमे की ज़रूरत है। मामूल के ताल्लुकात के लिए बातचीत और सिफारतकारी के ख्वाहां हैं। मुआहिदों के मुताबिक पानी तक बिला रुकावट रसाई SCO के मकासद को मज़ीद मुस्तहकम करेगी। उन्होंने कहा कि हम तमाम बैनुल-अक़वामी और दो तरफ़ा मुआहिदों का एहतराम करते हैं। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान हमेशा कसीरुल-जहती मकालमे और सिफारतकारी की ताकत पर यकीन रखता है। चीन की आलमी क़यादत SCO ही नहीं तमाम नुमाया इक़दामात में नजर आती है। चीन की कामयाबी सदर शी जिनपिंग के मुदब्बिराना और बसीरत अफरोज़ क़यादत की अक्कास है। SCO इलाक़ाई ताउन और इंज़माम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के देरपा आज़म की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इस हवाले से ये कहना था कि उम्मीद है कि ये ताउन और सहफ़रीकी मुलाक़ातें मुस्तक़बिल में मज़बूत नताइज देंगी। हम बारहा जोर देते रहे हैं कि ख़त्ते में रवाबित को बढ़ाना कितना अहम है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC इस विजन की अमली मिसाल है। CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मनसूबा है। SCO के मकासद इलाक़ाई रवाबित और माशी इंज़माम की तकमील में इलाक़ाई रवाबित मददगार साबित हो सकते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाबों ने कीमती इंसानी जानों का ज़िया किया है। SCO के मकासद इलाक़ाई रवाबित और माशी इंज़माम की तकमील में इलाक़ाई रवाबित मददगार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान शदीद बारिशों और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और तबाहकुन सैलाब
सैलाब की लपेट में है। उन्होंने कहा कि सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, जायदाद, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हम आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इजहार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान शदीद बारिशों की लपेट में है और इस वक्त तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाबों ने कीमती इंसानी जानों का ज़िया किया है। साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे बहादुर और साबित कदम आवाम इमदादी और बहाली के कामों में मसरूफ़ हैं। हम सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तान की मुतासिर कुन माशी बहाली सबके सामने है। हमारा माशी तब्दीली का मंसूबा 3 सतूनों पर मबनी है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में नई सरमायाकारी माशी तब्दीली का पहला सतून है। तहकीक और जिद्दत, तराजी की हौसला अफजाई माशी तब्दीली का दूसरा सतून है। गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तान की मुतासिर कुन माशी बहाली सबके सामने है। हमारा माशी तब्दीली का मंसूबा 3 सतूनों पर मबनी है, जिसमें उन्होंने कहा कि तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में नई सरमायाकारी माशी तब्दीली का पहला सतून है। तहकीक और जिद्दत, तराजी की हौसला अफजाई माशी तब्दीली का दूसरा सतून है। जामे टैक्स इस्लाहात के जरिए महसूलात में इजाफा माशी तब्दीली का तीसरा सतून है। हम अपनी नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बना रहे हैं, नौजवानों को बामकसद रोज़गार और मुस्बत मौक़े फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल में पाकिस्तान की मुतासिर कुन माशी बहाली तमाम तर दुनिया के सामने है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि SCO चार्टर के साथ गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करते हैं। हम अपनी नौजवान नस्ल को बाइख्तियार बना रहे हैं। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। इस न्यूज़ अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। राइट से राइट कर दिया, राइट सब राइट कर देगा। Zong MyFi बंडल सब्सक्राइब करें, खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। अफगानिस्तान के कई शहर 6.3 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले से लरज़ उठे। 650 जानें चली गईं, 1,500 से ज़ायद जख्मी। कोटरे बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने पर सहवन के मुताबिक देहात ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी।